of you, we have Shri Shankar Dayal Sharma ji, the 9th President of India, Shri Raghuram Rajan, the 23rd Governor of the Reserve Bank of India, Shri Anis Ahmed, lawyer in United Nations peacekeeping operations, and Shri Mohammad Barkatullah Bhopali, Prime Minister of the Provisional Government of India. The city has a rich cultural and historical heritage. Bhopal amalgamates historic ethnicity and contemporary metropolitan development. Food here is distinguished by the blend of its rich ethnic past, and its culinary ethnicity is best recognized for its affluent gamut of zesty dishes. The flavorful, abundant, lip-smacking customary dishes will make you have a tough moment from preventing your hand and rewarding your heart. भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य भारत की संस्कृति में जगमगाते दीपक के समान है, जिसके प्रकाश का एक अलग ही प्रभा एवं प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से इसका श्रृंगार किया है। यदि आप भोपाल और इसके आसपास के क्षेत्र को मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ओम के आकार की आकृति परिलक्षित होती है। मध्य प्रदेश में कला, साहित्य और संगीत का मधुर संगम देखने को मिलता है। यहाँ हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनंद रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है। यहाँ के जनजाति समूह में प्रतिदिन नृत्य, संगीत और गीत की रसधारा फूटती है। विंध्य, सतपुड़ा, मैकल, केसर जैसे शैल शिखरों से सुसज्जित होने के साथ साथ यहाँ जीवनदायिनी सरसरिताओं जैसे नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, तवा, ताप्ती तथा शिप्रा जैसी नदियों की सहस्त्र धारा फूटती है। प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में से प्रसिद्ध अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही स्थित था, जिसकी राजधानी महिष्मती अथवा उज्जैनी थी। यदि हम मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता की बात करें तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल एवं रीवा जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। सतपुरा की पहाड़ियों से घिरा एवं नर्मदा की जलधारा से परिपूर्ण निमार पौराणिक काल में अनूप जनपद कहलाता था। हरा भरा धन धान्य से भरपूर मालवा महाकवि कालिदास की धरती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने कभी भी अकाल नहीं देखा। उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना क्षेत्र से घिरी भूमि को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी बघेलखंड का वर्णन मिलता है। इस प्रांत का महाभारत एवं रामायण काल में भी उल्लेख मिलता है। नर्मदा नदी के किनारे बसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से संपन्न क्षेत्र का नाम महाकौशल है, जहाँ एक ओर बेड़ाघाट जैसा विहंगम जलप्रपात है तो दूसरी ओर परमहंसी में ज्योतिष और द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का आश्रम स्थित है। जहां एक ओर मध्य प्रदेश की माटी ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी दिए, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के क्षेत्र में श्री नरेंद्र करमरकर एवं अनिल काकोडकर जैसे महान वैज्ञानिक भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को कौन नहीं जानता। साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, हरिशंकर परसाई एवं मृणाल पांडे जैसे साहित्यकारों ने विशेष उपलब्धि अर्जित की है। महान कवि कालिदास भी मध्य प्रदेश की धरती की ही देन है। सिनेमा और गीत संगीत की दुनिया में अशोक कुमार, जॉनी वॉकर एवं अन्नू कपूर जैसे मंझे हुए कलाकार दिए, वहीं महान पार्श्व गायक किशोर कुमार तथा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे गायकों के गाए हुए गीत सदैव ही हमारे कानों में रस घोलते रहेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना का श्रेय राजा भोजपाल को जाता है। महारानी कमलापति ने यहाँ शासन किया था। भोपाल शहर के अंदर बड़े तालाब के पास उनकी स्मृति के रूप में कमला पार्क का निर्माण किया गया है। The 21 Indian Corps was raised on 12th August 1917 during the World War I, specifically for operations in the Middle East region against the German-Ottoman alliance. After active participation and playing a stellar role in the capture of Gaza and Jerusalem, the Corps was disbanded in 1918 at the end of the war. The Corps was re-raised in Persia on 6th June 1942 as a formation of the Indian Army during the World War II and was based at Chandi Mandir. Permanent retention of the Corps at Bhopal was authorized on 29th October 1990. अब हम भोपाल शहर में स्थित एक मिलिट्री फॉर्मेशन का आपसे परिचय कराते हैं। 21 कोर, जिसे हम सुदर्शन कोर के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सेना की एक स्ट्राइक कोर है जिसका मुख्यालय भोपाल शहर में स्थित है। इसका एक गौरवशाली अतीत रहा है। किसी चट्टान की तरह मजबूत और चीते की तरह फुर्ती से प्रहार करने वाला यह कोर देश की सुरक्षा में सदैव प्रतिबद्ध है। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य की पृष्ठभूमि से अवगत कराएंगे। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है और यह महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और भगवान का यह विराट रूप आकाश तक व्याप्त है। इसी से प्रेरणा लेते हुए भारतीय वायुसेना भारत के हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित है। Air power has been pivotal in playing a critical role in leveraging India's national interests and making India the net security provider in the region. In line with this, the theme for this year's Air Force Day is Indian Air Force, Air Power Beyond Boundaries, and the Indian Air Force invites the local populace to witness the scintillating showcase of aerial display coming soon. Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The Indian Air Force over the years has transformed into a modern aerospace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the Indian Air Force has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism. Through the years, our concepts have evolved based on operational experiences of real conflict situations as well as exercises within country and with friendly foreign air forces. Recent technological developments, including the synergy of air and space, have enhanced aerospace force unprecedentedly, making it astonishingly reliable, effective and responsive, and the preferred instrument in most situations of peace or war. The IAF's roles can be described as deterrence, protection, projection, and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal, Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan respectively. The IAF played a stellar role during COVID-19 relief operations and has been actively involved in transporting medical supplies, oxygen, and essential equipments within India and abroad. These operations demonstrate the IAF's commitment to providing assistance and relief during times of crisis and disaster, both domestically and internationally. India needs its Air Force to execute all of these. In today's times,
we find that the international interaction of the Indian Air Force is increasing. Leading nations want to engage with us and seek to include us in their alliances in maintaining the balance. Smaller nations look up to us for support, assistance, impart professional training, and sharing our operational experience. The Indian Air Force is using all of these opportunities to build an Indian influence, generate goodwill, and reap multiple dividends and help the nation emerge as a global leader. हाल ही के कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक विराट शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे वायु शक्ति की आवश्यकता भारत की सीमाओं पर हो अथवा उसके पार, भारतीय वायुसेना राष्ट्र एवं मानवता के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम एवं पेशेवर रूप से प्रतिष्ठित वायुसेनाओं में से एक है। इसका विशाल आयुध भंडार एवं मारक क्षमता इसे और भी घातक बनाते हैं। आज के बदलते परिदृश्य में भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने वायुयान बेड़े और हथियारों के आधुनिकीकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने आज मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सराहनीय बढ़त हासिल की है। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम एवं विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे वायु शक्ति का बखूबी परिचय देते हैं। भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल, देश तथा दुनिया की सहायता में भारतीय वायुसेना सदैव तत्पर रही है। देश तथा विदेशों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में भी भारतीय वायुसेना ने जोखिम भरे ऑपरेशन चलाकर जन धन की सुरक्षा सुरक्षित करने का साहसिक कार्य किया है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर एवं मित्र देशों के साथ विभिन्न ऑपरेशन एवं अभ्यास कार्यक्रम चलाकर आज दुनिया के सामने भारत को एक सशक्त वायु शक्ति के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में वर्णित है, अतः चेत त्वं धर्मं संग्रामं न करष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अव्यापसी। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ते हो तो अपने मान सम्मान के रक्षार्थ अपने कर्तव्य के पालन की अवहेलना करने पर तुम पाप के भागी बनोगे। इसी से प्रेरणा लेकर भारतीय वायुसेना राष्ट्र के रक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। Over the years, the Indian Air Force has evolved to adroitly manage its assets and make it available for both defense support and humanitarian assistance and disaster relief missions. The Indian Air Force has rendered yeoman service to the nation, and disaster relief operations have been one of the most challenging and satisfying. The humanitarian assistance and disaster relief capabilities our forces possess fulfill both India's internal and external needs and are a major cog in military diplomacy. The expertise, dedication, chain of command and control, and belief in leadership has always carried every mission to its successful culmination. This brings to fore the impressive inherent capabilities for humanitarian assistance and disaster relief, or HADR. Indian Air Force is specially suited where time and speed are of essence. The Indian Air Force has the nation's hard power assets for conducting soft power tasks, with a fleet of C-17 Globemasters that can lift up to 70 tons each, along with the IL-76, the C-130 Super Hercules, and AIM-32s. The Indian Air Force's capabilities are substantial. The Indian Air Force's helicopter fleet too is impressive, with the Mi-17 V5, the ALH, and the recently inducted Chinook and LCH Prachand helicopters.
देवियों एवं सज्जनों, इससे पहले कि हम प्रदर्शन प्रारंभ करें, हम प्रदर्शन स्थल एवं उड़ान परिस्थितियों से आपको परिचित कराते हैं। हम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर रुख करके सौंदर्यमयी भोजताल झील के किनारे बैठे हैं। अब हम आपको भोजताल के आसपास के लैंडमार्क्स या थल चिन्हों से अवगत कराएंगे और इन्हीं लैंडमार्क्स के अनुसार वायुयानों एवं फॉर्मेशंस के उड़ने की दिशा से आगे भी अवगत कराते रहेंगे। अब अपनी नजरों को बोट क्लब के बाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर ले जाएं, जहां पर वन विहार को आप देख सकते हैं। हमारी अधिकतर फॉर्मेशंस इसी दिशा से आएंगी। अब अपनी नजरों को उत्तर दिशा में मनुआभान टेकरी पर स्थित जैन मंदिर पर केंद्रित करें। हमारे कुछ विमान मंदिर के दाहिनी ओर से आएंगे। अब अपनी नजरों को राजा भोज की प्रतिमा की ओर ले जाएं। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान हमारे विमान इस ओर से आगे बढ़ेंगे। अब अपनी नजरों को पूर्वी दिशा में ले जाएं, जहां राजा भोज सेतु है। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान आप तेजस को इसी दिशा से आते हुए देखेंगे। Ladies and gentlemen, before we commence the proceedings of the air display, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated on the banks of the beautiful Bhojtal Lake while facing in northwesterly direction. We would be now orienting you with the landmarks around the lake and shall be announcing the approach of the flying formations with reference to these landmarks. Towards your west, that is on your left, is Van Vihar, the forest jutting onto the lake. And as we scan the horizon from left to right, you can see the hillock, famously known as Manuabhan Tekri, with the Jain temple located right on top of it, straight in front of you. Further, moving towards your right, you can see the statue of Raja Bhoj, and on your extreme right is the famous Raja Bhoj Setu. The skies are clear to partly cloudy, and visibility is in excess of 6 kilometers, which is a perfect weather for a display of this kind. अब हम 3 से भी अधिक एयरबेसों से लगभग 50 विमानों की मनोरम प्रदर्शन के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर, परिवहन वायुयान एवं सुपरसोनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। अधिकतर फॉर्मेशन हमारी बाईं ओर से आएंगी। कुछ फॉर्मेशन दूसरी दिशाओं से भी आ रही हैं, जिनकी घोषणा समय समय पर की जाएगी ताकि आप हर कलाबाजी को देख सके एवं उसका आनंद ले सके। We are about to witness a beautiful orchestration of about 50 aircraft flying from 3 airbases. The aircraft flying today will vary from slow-moving helicopters to transport aircraft right up to supersonic fighter jets. Most of the formations would approach the dais from our left. Some of the formations will also be flying in from other directions, which will be announced from time to time to ensure that you capture and enjoy every maneuver. Our hopes, like towering Himalayan eagles, aim at objects in airy height. The little pleasure of the game is from afar to view the flight. You may call it insanity, but we say, for God and country, we defy gravity. अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे स्काई डाइविंग टीम के सदस्य जल्द ही मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर भोपाल के आसमान में छा जाएंगे। क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। इसी भाव को आप आसमान पे कुछ ही देर में साकार होता हुआ पाएंगे। Ladies and gentlemen, in a few minutes from now, the Akashganga skydiving team of the Indian Air Force will perform a daring parachute display right in front of you. Let me apprise you, the members of the skydiving team will be jumping out of a Mi-17 V5 helicopter today, right in front of you as God's own angels. Believe me when I say you would not like to miss even a single moment of this show. Due to the peculiar nature of the drop zone onto our left and behind, the paratroopers in the last phase of their flight will disappear to their left for landing at the drop zone. जब तक वायुयान हमारे सामने आते हैं, चलिए हम आपको इस टीम की पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी देते हैं। इस टीम के सदस्य आगरा में स्थित पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल या पीटीएस के योग्य एवं दक्ष पैराशूट अनुदेशक हैं। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल पूरे विश्व में विख्यात है। यह संस्थान आगरा में स्थित है, जहां पर वायुसेना के अलावा अन्य भारतीय सैन्य बलों के कमांडोज को भी पैरा जंप का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह यूनिट सभी भारतीय वायुजनित बलों के प्रशिक्षण एवं सहयोग के साथ साथ पूरे वर्ष भर फ्री फॉल एवं कैनोपी कुशलताओं हेतु उत्तरदायी है। टीम का प्रत्येक सदस्य पैराशूट जंप अनुदेश के साथ साथ प्रत्येक प्रकार की ट्रेनिंग में उच्च तरह प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। While we wait for the aircraft to come overhead, allow me to give you an insight on the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of Paratroopers Training School located at Air Force Station, Agra. The unit is responsible for training and supporting all Indian airborne forces, as well as providing a distinctive demonstration of free fall and canopy skills throughout the year. Each team member undergoes continuous advanced training as para-jump instructors. Their exciting free fall display, which includes advanced maneuvers falling at speeds close to 150 km/h, and their famous unique tricolor canopy stack, is a sight to behold. आज के इस प्रदर्शन में एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 10 स्काईडाइवर्स को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर उड़ रहा है। बस आपके तालियों की गड़गड़ाहट अगर एक बार इनके कानों तक पहुंच जाए तो वे आपसे मिलने स्वयं ही पहुंच जाएंगे। लगता है आपके तालियों की गड़गड़ाहट हमारे कॉकपिट तक नहीं पहुंची। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऊपर मंडराते हमारे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो लेकर उड़ रहा है आकाशगंगा टीम को। Ladies and gentlemen, the 10-member team today will be jumping from a Mi-17 V5 of 159 HU from a height of 10,000 feet above the Bhopal Lake. The team leader is Wing Commander Rahul Jha, who has more than 1,000 jumps to his credit. The aircraft undertaking this spectacular display is captained by Wing Commander Rohit Chauhan and Squadron Leader Gaurav Sikkarwal as the co-pilot. Dear audience, I now request you to put on your shades and look straight above. Try to locate the free-falling birdies of the team piercing the blue skies. मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे आसमान में नजर गड़ाए रखें, जहां हमारे स्काई डाइवर्स आपको फ्री फॉल करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या आप देख सकते हैं अपनी सूक्ष्म नजरों से हमारे स्काई डाइवर्स को? देखिए किसी बिंदु की तरह वो आकाश में होंगे और जल्द ही अपनी छतरी को लहराएंगे। देखिए अब उनकी छतरियां खुल रही हैं। Look at those colorful canopies opening in the air, just like flowers blooming in the air. क्या आप तिरंगे के रंग वाले पैराशूट्स को गिन सकते हैं? 1, 2 या 3 तिरंगे की छटा को आसमान में बिखेर रहे हैं।
पहला पैराशूट में विंग कमांडर ए के यादव, दूसरे में JW सतीश एवं तीसरे में सार्जेंट दीपेंद्र। Ladies and gentlemen, look straight ahead and try to locate the 3 tri-colored canopies displayed by Wing Commander A.K. Yadav with more than 1,500 jumps to his credit, Junior Warrant Officer Satish with more than 600 jumps to his credit, and Sergeant Dipendra with more than 350 jumps to his credit. Please give a huge round of applause for the tri-colored canopies. वहीं लाल और सफेद पैराशूट लिए आसमान में दिख रहे हैं वारंट ऑफिसर बलराम अपनी 700 जंप्स के अनुभव लिए। एयर मार्शल विभास पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मेंटेनेंस कमांड, and Mrs. Ruchira Pandey, President Air Force Family Welfare Association Regional Headquarters Maintenance Command have arrived. क्या आप अपने ठीक ऊपर इंद्रधनुष के 7 रंगों वाले पैराशूट को देख सकते हैं? इंद्रधनुष की छटा को आसमान में बिखेर रहे हैं सार्जेंट सुनील अपनी 500 जंप्स के अनुभव के साथ। Do you see the 7 colors of rainbow in the skies? Maneuvering the whip gear is Sergeant Sunil with more than 500 jumps to his credit. और ऊपर देखते रहिए, ग्रे रंग की कैनपी को बड़ी ही दक्षता से उड़ा रहे हैं वारंट ऑफिसर महापात्रा 1350 जंप्स के अनुभव के साथ। तो जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Depicting the unity in diversity, joining their hands together in blue and white striped canopies are 2 jumpers flying their canopies joined side by side in this complicated maneuver called as hand plane. They are only joined with the help of their hands in a tiresome and physically demanding maneuver. The maneuver is being performed by Warrant Officer S.K. Chauhan to the left and Warrant Officer Amar Singh to the right. विविधता में एकता को दर्शाती नीली और सफेद धारीदार कैनोपी में अपने हाथों को एक साथ जोड़े हुए 2 पैरा जंपर्स इस जटिल कार्य में अपनी पैराशूट्स को एक साथ जोड़कर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कलाबाजी को हैंड प्लेन कहा जाता है और इसमें अत्यंत ही दक्षता की आवश्यकता होती है। Coming in next is a 3 canopy stack formation known as the trio. This is a very complicated maneuver being carried out the most experienced of all. The formation emulates the tricolor in the azure skies of Bhopal. Flying the saffron canopy depicting the strength and courage is Junior Warrant Officer Anil Kumar, symbolizing the peace, unity and truth. Flying the white canopy is Wing Commander Rahul Jha, the formation leader. Depicting abundance, growth and prosperity of the land, flying the green canopy is Junior Warrant Officer Ramesh. लैंडिंग के लिए अगली आने वाली 3 कैनोपी स्टैक फॉर्मेशन है, जिसे हम ट्रायो के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही जटिल कलाबाजी है, जिसे अत्यंत ही अनुभवी जंपरों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और वे उतरने में उतने ही शानदार लगते हैं जितने कि भारतीय वायुसेना के राष्ट्र की शक्ति एवं स्वतंत्रता की परिचायक। क्षमता एवं साहस के द्योतक केसरिया कैनोपी को उड़ा रहे हैं JW अनिल कुमार अपनी 1000 से भी अधिक जंप के अनुभव के साथ। शांति, एकता एवं सच्चाई के प्रतीक सफेद कैनोपी को उड़ा रहे हैं टीम के लीडर विंग कमांडर राहुल झा 1300 भी अधिक जंप के अनुभव के साथ। और तीसरी भूमि की उर्वरता, विकास एवं समृद्धि को दर्शाने वाली हरी कैनोपी को उड़ा रहे हैं
जूनियर वारंट ऑफिसर रमेश। उन्हें 800 से अधिक जंप का अनुभव प्राप्त है। सफेद और नीली पट्टियों वाले पैराशूट्स को पर्वतों के पीछे वाले ड्रॉप जोन के ऊपर ले जाते हुए वारंट ऑफिसर बलराम 1000 से अधिक जंपों के अनुभव के साथ। Ladies and gentlemen, look straight above as the hand plane formation delinks right in front of you. आपके ठीक सामने पर्वत के ऊपर हैंड प्लेन फॉर्मेशन अब डीलिंक हो चुकी है और दोनों पैराट्रूपर्स लैंडिंग जोन की ओर बढ़ रहे हैं। All eyes on the trio formation as they delink, and let the ground shake with the magnitude of your applauses. 3 तिरंगे के रंगों वाले पैराशूट्स ने अपने आप को डीलिंक किया और अब वे बड़ी ही दक्षता के साथ लैंडिंग जोन की ओर बढ़ रहे हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के पांव जाते उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो जोर लगाइए अपने तालियों में ताकि पत्थर भी पानी बन जाए। Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the para jump as much as the team enjoyed performing it for you. You just witnessed the mesmerizing skills of our skydivers and the famous Akash Ganga team. Now you would be enthralled by the aerial display of various aircrafts with their breathtaking maneuvers. I'm sure you all have woken up to the thundering of rotors every day for the past few days as the mighty Chinooks have come to the City of Lakes. The Chinook helicopter is a twin-engine tandem rotor helicopter of American origin manufactured by Messrs. Boeing. This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions, and special heliborne operations.
Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-the-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machines and the plethora of roles that can be envisaged using its capabilities. The unique capability of the platform being underslung operations, wherein the helicopter carries loads of all shapes and sizes hanging below the helicopter from its center into the battlefield. The Chinooks performing today are from the 126 helicopter flight known as the Featherweights. This marvel was inducted in Chandigarh in 2019 and has been instrumental during operations in the eastern Ladakh conflict. The helicopter has been carrying out regular night operations in Ladakh and the Jammu and Kashmir sector. It is the only helicopter to carry out night operations in the Siachen Glacier. दर्शकों, अब कुछ ही देर में आपके सामने भारतीय वायुसेना का 2 चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी हैरत अंगेज कर देने वाली कार्यवाही का प्रदर्शन करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए अपने सामने के क्षितिज की ओर, मनुभान टेकरी पर स्थित जैन मंदिर के दाहिनी ओर। क्या आप वहां से आते हुए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं? अपनी दृष्टि को और भी तीव्र कीजिए, क्षितिज के ऊपर ध्यान से देखिए। आसमान का सीना चीरते हुए 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। Ladies and gentlemen, look straight ahead, right of the Jain temple over Manuabhan Tekri, and shortly you can see the might of the Indian Air Force, chopping the air on its way towards this huge lake. The mighty beast, the Chinook, with the frame of a giant and the engine of a beast. Ladies and gentlemen, once again, please keep looking straight ahead. Ladies and gentlemen, look how these rock-solid platform with immense pride and purposeful slide are closing in. Taming this beast is a set of highly professional pilots and engineers who train day and night to master its moves. Today you will have a closer glimpse of the maneuvers which will be performed by Bheem formation led by Group Captain A.P. Singh and Squadron Leader Bharti in Bheem 1. Bheem 2 is being flown by Wing Commander Thakur, who belongs to Bhopal, and Squadron Leader Arpit. You can now see the 2 Chinook helicopters approaching from your front in fighting formation and would perform the split maneuver. अपनी दृष्टि को दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स पर केंद्रित रखें। थोड़ी ही देर में वे एक स्प्लिट मनूवर को अंजाम देंगे। और यहां वे कर रहे हैं स्प्लिट मनूवर। तालियों से स्वागत कीजिए दोनों चिनूक्स का। The aircraft would now carry out a circuit and close in towards the dais, performing synchronous maneuvers while flying from the center of the lake.
While closing in towards the days, the Chinooks is also losing height and is now descending to ultra-low levels while flying at high speeds. The helicopter will come forward and carry out a quick stop, and this displays the capability to maneuver itself and come to an instant halt if the mission so demands. दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी गति को अत्यंत ही धीमा कर रहे हैं और धीमा करने के उपरांत मानो वे हवा में थम से जाएंगे। अपनी शक्ति द्वारा लहरों को उफनाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स। This state of being stationary in air at a point in space is called hover, and Chinook is said to be hovering in free air now. This maneuver is the most skilled task and requires a very high degree of precision and crew coordination while looking the simplest of all. A huge round of applause for the gracious presence and the bold stance of this marvelous platform. Look how the helicopter will now position itself for a specialized non-military maneuver so close to the surface. They are now going to turn about the nose. This maneuver involves the use of all possible limbs available for the pilot to make sure that the nose of the helicopter remains pointing to one point in the center and the helicopter rotating about this center. What a sight it is to see such highly skilled tasks being done with such ease. अब दोनों चिनूक एक ही स्थान पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। Ladies and gentlemen, now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly bow down in front of you and greet you. They would thank you for having come here to witness the hard-to-believe maneuverability and the insane synchronization with which both the Chinook aircrafts are performing in front of you. देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि शक्तिशाली चिनूक आपको प्रणाम करने जा रहा है। इसके प्रणाम को तालियों से स्वीकार कीजिए। This is fondly known as the Namaste maneuver, with both Chinooks holding the position in the form of bowing to the audience. Displaying excellent agility with thrill and pride during Namaste maneuver, both helicopters will now turn inwards like two beasts facing off each other. This maneuver shows exceptional skills of the pilots to maintain position and change direction only. Watch as they perform a graceful turn showing how this heavy lift helicopter can remain steady in challenging conditions too. Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge. As you can see, the Chinooks in front of you carrying out a rear takeoff and depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort.
At this juncture, it is pertinent to mention that the Indian Air Force has set a record by executing the longest sortie by helicopter in a country in April 2022. And Indian Air Force Chinook undertook the longest non-stop helicopter sortie in India, flying from Chandigarh to Jorhat in Assam. The 1910-kilometer route was completed in 7 hours and 30 minutes and made possible by the capabilities of Chinook, along with the operational planning and execution by the Indian Air Force. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan and Mrs. Sadhna Singh have arrived. देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं श्रीमती साधना सिंह का आगमन हो चुका है। Ladies and gentlemen, behold your breath as the helicopters turn towards you all. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. Remember to keep your cameras ready to capture these unforgettable moments in the sky. Ladies and gentlemen, keep looking ahead as the helicopters are sliding left and then to the right in perfect harmony facing the wonderful audience gathered here today. Don't miss the chance of cheering up once the helicopters pass in front of you. Coming to the most exciting part, both helicopters will now turn away from the audience and open their ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं श्रीमती साधना सिंह का दर्शक दीर्घा में आगमन हो चुका है। Blink and you'll miss the chance of waving them back. चिनूक अब आपको अलविदा कह रहा है। अपने हाथों को हिलाकर एवं तालियों से आप भी उसे अलविदा कहिए। There they go after a flawless performance, leaving everyone in awe. The air display of Chinook stands as the testament to the incredible technology and skill of the aircrew. I'm sure you'll agree with me in saying that Chinook is not just a helicopter, it's a symbol of strength, versatility, and precision. And now it's finally time to wave the Chinooks goodbye.
as you can see the mighty Chinook leaving behind the trails of its bear. सतपुड़ा की घाटियों से विंध्य की गुफाओं तक नर्मदा से सिंचता विहंगम प्रदेश हूं। भारत का दिल हूं मैं मध्य प्रदेश हूं। मालवों के साहस से बघेलों की यान तक, निमाड़ियों की वीरता से बुंदेलों की शान तक, रग रग में दौड़ता शौर्य का संदेश हूं। भारत का दिल हूं मैं मध्य प्रदेश हूं। कमलापति की आन हूं, चंद्रशेखर का बलिदान हूं, इतिहास के पन्नों में जड़ा समर्पण का बखान हूं, राष्ट्र पर मिटने का देता संदेश हूं। भारत का दिल हूं मैं मध्य प्रदेश हूं। परंपरा में लीन हूं, विकास में प्रवीण हूं, किसान का सम्मान में विज्ञान का संदेश हूं। भारत का दिल हूं मैं मध्य प्रदेश हूं। विकास पर आरूढ़ मैं भविष्य का आह्वान हूं, सुनहले भविष्य को संजोता चक्षु अनिमेष हूं। महाकाल की कृपा हूं मैं, विजयासन का अनुदेश हूं। भारत का दिल हूं मैं मध्य प्रदेश हूं। भारतीय वायुसेना के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम मध्य प्रदेश के आकाश में अपना प्रदर्शन करेंगे। Air power has been pivotal in playing a critical role in leveraging India's national interests and making India the net security provider in the region. In line with this, the theme for this year's Air Force Day is Indian Air Force Air Power Beyond Boundaries. And the Indian Air Force invites the local populace to witness the scintillating showcase of aerial display coming soon. अब हम आपको भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य की पृष्ठभूमि से अवगत कराएंगे। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और भगवान का यह विराट रूप आकाश तक व्याप्त है। इसी से प्रेरणा लेकर भारतीय वायुसेना भारत के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। Indian Air Force is one of the largest and professionally acclaimed air forces in the world. The Indian Air Force over the years has transformed into a modern airspace power that is capable of controlling and exploiting air and space environments in order to achieve India's national and security objectives. Operating in an ever-evolving geostrategic scenario against varied threats, the Indian Air Force has performed all its tasks with utmost dedication and professionalism.
The Indian Air Force's roles can be described as deterrence, protection, projection, and peacetime roles like humanitarian assistance and disaster relief, such as Operation Maitri in 2015 after the aftermath of the earthquake in Nepal. Operation Rahat and Operation Sankat Mochan for evacuating Indian and foreign nationals from Yemen and South Sudan, respectively. आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि अब हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल का आगमन हो चुका है। हम वीर हैं आकाश के, हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। धरती नभ अंतरिक्ष या हृदय को जीतना, जय हम करते गए, हम जिधर जिधर चले। सीमाओं के अधीन हो या कि उसके पार हो, विमानों की हुंकार से और अचूक वार से शत्रुओं को ध्वस्त पस्त विजय समर कर चले। शौर्य बन के लहू है रगों में दौड़ता, भाव कर्म प्राण सब बलिदान अपना कर चले। हम वीर हैं आकाश के, हम लक्ष्य की ओर बढ़ चले। महामहिम राज्यपाल अब दर्शक दीर्घा में पधार चुके हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की ओर से हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं उनका हमारे बीच आगमन पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। On behalf of Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary and all personnel of the Indian Air Force, we extend a very warm welcome to the Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangu Bhai Patel, for gracing this occasion by his esteemed presence. We also are grateful to the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, for sparing his valuable time to be with us. देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि हम अगला प्रदर्शन आरंभ करें, हम प्रदर्शन स्थल एवं उड़ान परिस्थितियों से आपको परिचित कराते हैं। हम उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर रुख करके सौंदर्यमयी भोजताल झील के किनारे बैठे हुए हैं। अब हम आपको भोजताल के आसपास के थल चिन्ह या लैंडमार्क्स के अनुसार वायुयानों एवं फॉर्मेशंस के उड़ने की दिशा से अवगत कराएंगे। अब अपनी नजरों को बोट क्लब के बाईं ओर पश्चिम दिशा की ओर ले जाएं, जहां पर वन विहार को आप देख सकते हैं।
हमारी अधिकतर फॉर्मेशंस इसी दिशा से आएंगी। अब अपनी नजरों को उत्तर दिशा में मनुआभान टेकरी पर स्थित जैन मंदिर पर केंद्रित करें। हमारे कुछ विमान मंदिर के दाहिनी ओर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब अपनी नजरों को राजा भोज की प्रतिमा की ओर ले जाएं। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान हमारे विमान इस ओर से आगे बढ़ेंगे। अब अपनी नजरों को पूर्वी दिशा में ले जाएं, जहां राजा भोज सेतु है। लो लेवल एरोबैटिक्स के दौरान आप तेजस को इसी दिशा से आते हुए देखेंगे। Ladies and gentlemen, before we commence the proceedings of the air display, let us orient ourselves with this venue and the flying environment. We are seated on the banks of the beautiful Bhojtal Lake while facing in northwesterly direction. We would be now orienting you with the landmarks around the lake and shall be announcing the approach of the flying formations with reference to these landmarks. Towards your west, that is on your left, is Van Vihar, the forest jutting onto the lake. And as we scan the horizon from left to right, you can see the hillock famously known as Manuabhan Tekri with the Jain temple located right on top of it. Further, moving towards your right, you can see the statue of Raja Bhoj, and on your extreme right is the famous Raja Bhoj Setu. The skies are clear to partly cloudy and visibility is in excess of 6 kilometers, which is a perfect weather for a display of this kind. Today's flypast is an outcome of focused training and professionalism of the air and ground crew. The coordination required to line up over 50 aircraft for a flypast, all taking off from different bases over the country, is incredible. The timelines are absolute and the margin of error negligible. So sit tight and wait for our pilots and the machines to put on the most incredible air show you shall ever witness. Ladies and gentlemen, please look towards your left over the horizon over Van Vihar. Approaching the lake is Dhwaj formation of 4 Chetak helicopters, trooping the national flag of India and the Indian Air Force ensign, the symbolic opening formation that traditionally sets the tone for the show to commence. आपके बाईं ओर से 4 चेतक हेलीकॉप्टर की ध्वज फॉर्मेशन आ रही है। राष्ट्रीय ध्वज एवं भारतीय वायुसेना के ध्वज को लेकर गर्व से आगे बढ़ती यह फॉर्मेशन आज भोपाल के आसमान में एक नई गौरव गाथा लिख रही है। The Dhwaj formation, comprising 4 Chetak helicopters of 141 HU known as the Flamingos in inverted wineglass formation, being led by Group Captain Suryakiran as Dhwaj 1, who is trooping the national flag, and Wing Commander Gagan Sikri as Dhwaj 2, carrying the Indian Air Force ensign. देवियों और सज्जनों, अब आप अपनी बाईं ओर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। आसमान में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है किरण मार्क 2 की फॉर्मेशन। मानो लग रहा है आज भोपाल के आकाश में भारतीय ध्वज के तीनों रंगों से रंग जाने के लिए तैयार बैठा हो। राष्ट्र प्रेम का एक अनुपम दृश्य। Next, approaching on the horizon towards Van Vihar shall be the Rudra formation, comprising the pride of India. Indigenously developed advanced light helicopter Mark III in a WIC formation. The formation is flown by Wing Commander Jamkar and Squadron Leader Samant, with Wing Commander Vishal and Flight Lieutenant Iqbal on the right, and Squadron Leader Dubey and Squadron Leader Reha on the left of 111 HU, also known as the Snow Tigers. दर्शकों, अब आप अपनी बाईं ओर से रुद्र फॉर्मेशन को आता हुआ देख रहे हैं, जिसमें सम्मिलित हैं भारत का गर्व, भारत में ही विकसित किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है,
वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Coming in next is a three-aircraft wing formation, Prithvi, led by the majestic transport aircraft C-130J Super Hercules. The captain of the aircraft is Wing Commander Sangram Singh of 87 Squadron. Captain flying in the left AN-32 is Wing Commander Karamjeet Singh. And on the right AN-32 is Wing Commander P.K. Pandey from 12 Squadron. Both these aircraft form an integral part of the tactical and strategic airlift capabilities of the Indian Air Force. Coming in from your left over One Vihar, the Prithvi formation. दर्शकों, अब आपके सामने आ रही है पृथ्वी फॉर्मेशन, जिसमें अग्रणी है विशालकाय परिवहन वायुयान जिसका नाम है C-130J सुपर हर्क्यूलिस। उसके दोनों ओर हैं AN-32। Flying in next, in a while, from your left shall be the Gajraj formation with one IL-78 along with two Mirage 2000s in refueling role. The formation displays the capability to conduct air-to-air refueling that is intensively skill-based and has been honed by leading air forces over decades. The maturing of this capability in the Indian Air Force is a remarkably short period is testimony to the professionalism and commitment of our aircrew. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sunda and Wing Commander S.K. Singh as a navigator from 78th Squadron known as the Mars. And the Mirage 2000s are being led by Squadron Leader B.A. Suhas and Wing Commander A. Gholve from 7th Squadron, the Battle Axis. आपकी बाईं ओर से अब आगे बढ़ रही है गजराज फॉर्मेशन। हवा में ही ईंधन भरने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए ये विमान आपको अपनी संक्रिय क्षमताओं से परिचित करा रहे हैं, जिसके बल पर हमारे फाइटर्स बिना लैंड किए दूर दराज के देशों में सीधे उड़ान भर सकते हैं। Here you can see them just short of connecting to the refueling aircraft to take fuel in the air. Next in sequence are the Sukhoi 30 MKI and our very own indigenous marvel, the Tejas, shall be flying in Badal formation depicting fighter-to-fighter refueling. The formation shall depict the Tejas in pre-contact position during the process of taking the fuel from the Big Brother Su-30 MKI. अब अपने नेत्रों को फिर से वन विहार के ऊपर की ओर क्षितिज पर ले जाएं। वहां पर एक फाइटर से दूसरे फाइटर में ईंधन भरने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए आगे बढ़ रही है बादल फॉर्मेशन। Ladies and gentlemen, look towards One Vihar, Wing Commander Jagdale and Flight Lieutenant Bajwa from 24th Squadron known as the Hawks flying the MKI and Wing Commander Patnaik from 18th Squadron known as the Flying Bullets is the captain of the Tejas. Flying in next are 5 Jaguars, one of the most formidable strike aircraft of the Indian Air Force, in arrowhead formation named Shamsher.
The formation would be streaming fuel while flying in front of you. The formation is being led by Group Captain M. Garg from 27th Squadron. अब आपके सामने आ रही है 5 जैगवार एयरक्राफ्ट की शमशेर फॉर्मेशन। जैगवार विमान मुख्यतः एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो सीमाओं के पार शत्रुओं के ठिकानों को तबाह करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जिस हिमगिरी को रहे घमंड, उसका चूर अहंकार करे। वर्षा आंधी आतप अखंड, ना कर सके जिसको विखंड। तो तालियों से स्वागत कीजिए शमशेर फॉर्मेशन का। Like thunder, approaching from your left, you will now see our very own 5 light combat aircraft Tejas in arrowhead formation in the sky. अब अपने नाम को सार्थक करता भारत का गौरव तेजस 5 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन में आपकी ओर बढ़ रहा है। अपनी दृष्टि को केंद्रित करें वन विहार के ऊपर के क्षितिज पर। तेजस वजन में हल्का अवश्य है, किंतु बात जब मातृभूमि की रक्षा की आती है तो इसकी घातक शक्ति अतुलनीय है। तालियों से स्वागत कीजिए भारत के गौरव तेजस फॉर्मेशन का। The formation is being led by Group Captain M. Surendran from 45 Squadron, the Flying Daggers. Ladies and gentlemen, the most awaited formation of Bharat is going to be unleashed in front of you, wherein we have the indigenously developed light combat aircraft as Bharat 1 and the super majestic fighter Su-30 MKI as Bharat 2. We proudly present to you the major success story of the Indian aerospace industry, the protector of the Indian skies, the light combat aircraft Tejas. After decades of research and development by countless numbers of exceptional individuals, the Tejas was finally inducted in the Indian Air Force in 2016, with the first unit, the 45 Squadron, formed at Bangalore. Ladies and gentlemen, brace yourself for the first maneuver by the Bharat 1, the hesitation roll. Here it goes. 1, 2, 3, and it pulls up into the lovely skies of Bhopal. This maneuver is carried out to shoot down the adversary by exploiting the vertical tail. Watch as the pilot prepares to carry out a max rate turn in front of you. The pilot now spots an adversary and starts turning like a beast. The pilot is now positioning for the signature maneuver, the red-eye turn. In this, the pilot is pushed to the other end of the envelope where the aircraft is subjected to negative 3.5 G. Watch as he carries out an inverted outside turn right in front of you. Here it goes. And with the inverted turn, the Tejas slowly exits the arena.
Ladies and gentlemen, look towards one Vihar Su-30 MKI as Bharat 2 flown by Group Captain P.K. Thakur and Flight Lieutenant Nanath enters the arena demonstrating a high-speed run. And there she comes right in front of us at speeds over 900 km per hour. Don't be fooled by the noiseless dash as thunder always follows the Sukhoi. The pilot is now carrying out a max rate turn. Ladies and gentlemen, the pilot will now execute the maneuver called the loop tumble yaw. And as she reaches the top of the loop, notice that she is inverted. And here she is inverted on top of the loop at this stage. Instead of the nose coming down, you see the aircraft tumbling out in the sky, carrying out a somersault, followed by a flat yaw turn, and before your very eyes, the aircraft says goodbye to all the known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight, and that too in a short span of time. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology in the aircraft. The pilot is now positioning to carry out rolls to the right. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the mighty flanker shall effortlessly carry out multiple rolls. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. He is now carrying out a teardrop turn for a low-speed run from your left to the right. What distinguishes the supersonic aircraft from others is the ability to fly at low speeds as well. And this is precisely what the MKI will demonstrate to you as she flies past at just 250 km per hour. Notice the high angle of attack. As they say, even the wind stops to stare. You will now see that from a speed of 250 km per hour, the mighty flanker accelerates in no time. The pilot is now positioning for a minimum radius turn. And right in front of you, he will carry out a minimum radius turn. Notice the very small radius of turn of the flanker as he turns right in front of you. A nightmare for the enemy and ensures that it always comes out as the winner. Demonstrating the maneuverability of the aircraft, look again, there she goes and exits the arena. Ladies and gentlemen, keep looking ahead as the Tejas will once again be entering the arena. And here the Tejas is pulling up in a loop, showing off its majestic delta platform. Continue looking out. The aircraft now comes down for a very tight offensive turn, displaying its superior aerodynamic design and capabilities.
and would be turning tight on a track. Watch it as it effortlessly turns in a radius of just a few hundred meters, which looks unbelievable for a fighter plane. The pilot now reverses and would be positioning the aircraft for the final two maneuvers. The fourth generation fighter, this mean machine, is one of the lightest in the world. Light it may be, but it surely packs a heavy punch when it comes to protecting its motherland. Featuring the state-of-the-art fly-by-wire systems and avionics, this machine flies like a dream but hunts like a tiger in battle. Now the Tejas would manifest an inverted flight right in front of you. Coming in from the right, the Tejas. Ladies and gentlemen, get ready to behold the sight. And the final maneuver would be the majestic vertical Charlie as the Teja pulls up and bids goodbye to the lovely audience of Bhopal. Ladies and gentlemen, please look towards One Vihar as Su-30 as Bharat 2 makes the final grand entry. Ever seen a fighter in reverse gear? If not, then watch on as the pilot will now execute a remarkable maneuver called the tail slide. And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail. In anticipation of the approaching festive season, the Su-30 heralds it with fireworks in the skies of Bhopal. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in the sky. And now, as the name suggests, she slides forward and downwards. This maneuver shows the extraordinary handling of the aircraft and the stability of its jet engines. And having seen the MKI perform some breathtaking maneuvers, it is time for the grand finale. The next maneuver is going to be the vertical Charlie, also known as the victory roll, in which the aircraft will pull up in steep vertical attitude and rolls rapidly into the vertical to touch the sky with glory. And here the MKI is approaching towards us from the front for a vertical Charlie. Focus your attention to the front, and here he pulls up into the vertical, carrying out rolls and lights up the sky once again. That, ladies and gentlemen, was the mighty Sukhoi 30 MKI demonstrating its superior agility. This is the only operational combat aircraft in the Indian Air Force with thrust vectoring and truly the very best. We hope this aerobatic display gave you some idea about the maneuvers the aircraft is capable of performing. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the Bharat formation. जाएं, जहां 3 सुखोई 30 MKI की त्रिशूल फॉर्मेशन आसमान का सीना चीरती हुई आपकी ओर तीव्र गति से बढ़ रही है। क्या आप त्रिशूल फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जहां मध्य में है ग्रुप कैप्टन प्रशांत और फ्लाइट लेफ्टिनेंट धानी, उनके बाईं ओर हैं विंग कमांडर दीपक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मणि, एवं उनके दाहिनी ओर हैं स्क्वाड्रन लीडर सतत एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंकज। तीव्र गति से आपकी ओर बढ़ रही है त्रिशूल। भोपाल के संस्थापक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य के सम्मान में त्रिशूल को नभ में उत्कृत करते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन।
जय हिंद, सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों। तो भोपाल वालों, कोखा पठान, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? अभी आप सबने देखा आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI। और बस अब तैयार हो जाइए और भी अद्भुत प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में इस झील की सुंदरता में चार चांद लगाने आ रहे हैं हमारे सारंग दल के 4 हेलीकॉप्टर। And we promise you that this display will become a part of your most cherished memories. Kokha, तैयार हो ना सब? Because our pilots are now all set to dazzle this arena with overwhelming display of skill, grace and beauty. So please welcome the brand ambassadors, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast to the celebrations of 91st anniversary of Indian Air Force. Leading the formation is Sarang 1, right behind him is Sarang 4, Sarang 2 is formatting to his left and Sarang 3 is to his right. Sarang 1 is being flown by the Commanding Officer Group Captain Santosh Kumar Mishra with 500 plus displays to his credit. Today his co-pilot is Wing Commander Gokul Krishnan. स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास को प्रोत्साहित किया है और अब भारतीय वायुसेना की यह भव्य टीम अपनी अगली आकृति से आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए हवा में अंग्रेजी अक्षर आई का निर्माण कर आपके सामने से गुजरेगी। And this I stands for you, me, our motherland and for the indigenization. और अब राजा भोज सेतु की ओर से आते हुए सारंग बखूबी इंडिजनाइजेशन का प्रदर्शन करते हुए। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे। Continuing with the introduction, Captain of Sarang 2 is Squadron Leader Dhanveer Singh. The co-pilot of Sarang 2 is Squadron Leader Akash. The pilot in command of Sarang 3 is Wing Commander Chandan Patnaik. His co-pilot today is Squadron Leader Gokul. Squadron Leader Karan Prabhakar is in command of Sarang 4. His co-pilot today is Wing Commander Sridhar. The team performs under the ever watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is a Wing Commander Thakur Vikas Raj Singh, assisted by the videographers. और अब अपनी नजरें वन विहार की ओर बनाए रखें। जल्द ही टीम लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधे उनकी कॉकपिट से। हवा में डायमंड की है आकृति खास भोपाल की भव्यता के लिए। Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise. And here goes number 4 pulling up for a stall turn. You can wave at the pilots and wish them luck. Here they are making a short exit and will be soon back in the arena with more thrill.
career to right in front towards Manua Bhantekri as Sarang 1, 2, and 3 are positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Leap. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. So hold your breath and look straight ahead as Sarang 1, 2, and 3 run in for the Dolphins Leap. And here they go, like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins Leap. And as promised, there goes number 4 joining up with the formation. विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर यह टीम देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना का सदस्य होने के लिए प्रेरित करती है। इन खूबसूरत हवाई मशीनों को पूरी क्षमता से उड़ाने के साथ यह टीम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की योग्यता एवं पायलटों के कौशल को ही न दिखाकर यह भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगामी प्रवीणता को भी दर्शाती है। Now, as the team is preparing for the next maneuver, a word about the maintenance team who ensures that these 4 birds take to the skies and return safe. The team of the technicians is being ably led by Wing Commander Priyanshu, assisted by the squadron leader Anmol. The flexibility of this aircraft has been time tested from varied operations to suave displays. On this note, set your gaze straight ahead as team is rolling in for the crossover break. Both the pairs flying abreast will execute a synchronized banking, dramatically tilting towards each other until their rotors are nearly vertical and crossing in a near miss. Look straight ahead for crossover break as we await the leader's call. Crossover break first. भोपाल वालों, जब आसमान की गड़गड़ाहट कम नहीं हो रही तो आपकी तालियों में इतनी कंजूसी क्यों? चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी जाबाज पायलटों के लिए। Now, ladies and gentlemen, boys and girls, get ready to witness the agility of the helicopters and the unmatched precision of our pilots even closer to you. So hold your breath as both the pairs will close in towards each other and the pilots will execute a coordinated pitch up, cross each other's flight path with just a hair's breadth of separation. So अब अपनी नजरें दोनों ओर बनाए रखें क्योंकि राजा भोज सेतु की ओर से आ रहे हैं सारंग 1 और सारंग 3 और 1 बिहार की ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2 और सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए। It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only 1 rotor diameter, and such precision is the result of immense practice, training and split-second reactions that team undergoes each and every time. ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार विपरीत दिशाओं से आते हुए सारंग 3 एवं सारंग 4 एक दूसरे को तेज गति से पार कर आपके समक्ष स्टॉल टर्न करते हुए अपने सिग्नेचर मैन्यूवर का प्रदर्शन करेंगे। लुक स्ट्रेट अहेड फॉर हाई स्पीड क्रॉस। Diversity is India's distinction. That trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front, we present a beautiful pulsating sarang heart
to the heart of India, the city of lakes, Bhopal, with love, Sarangs. जोश के साथ होश का होना भी अति आवश्यक है। उड़ान प्रदर्शन का यही आधार है। हेलीकॉप्टर को उसकी पूर्ण क्षमता से जोश और होश से उड़ाना तब तक संभव नहीं जब तक हमारे तकनीशियन इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इंजीनियरिंग अफसरों के साथ मिलकर इसको अंजाम न दें। Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force, an embodiment of the professionalism and ethos of the IAF. The Sarang team has time and again been called to the fore in humanitarian assistance and disaster relief missions. Since the team's formation, it has mesmerized the audience in Singapore, Chile, UAE, Germany, United Kingdom, Bahrain, Mauritius, Sri Lanka, and in 2021, the Sarang team became the first to participate and represent our country in March 21 International Air Show held in Moscow. और अब अपनी नजरें मनोभान टेकरी और बनाए रखें क्योंकि सारंग जा रहे हैं अपने आज के आखिरी मैन्यूवर के लिए. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the team is rolling in for the grand finale of today's display, the Sarang split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. Let's listen out for the leader's call. और ये थे हमारे कहने लगे भन्नाट ना एकदम मजा आया, हमें भी आया. सारंग टीम की ओर से आज के लिए इतना ही. उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी. विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी यह सारंग टीम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है. टीम के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए हमें sarang_IAF पर फॉलो करें. On behalf of Sarang team, this is Sarang commentator Flight Lieutenant Pallavi Sangwan thanking you all for being such a lovely and lively audience. पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जबानी. अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी. श्री हरिवंश राय बच्चन की इन्हीं पंक्तियों की तरह आज भोपाल के दिलों में अपनी छाप छोड़ेंगे भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम. नमस्कार भोपाल. सारंग टीम के अविस्मरणीय प्रदर्शन के बाद अब कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे सूर्यकिरण टीम के दिल दहला देने वाले हैरत अंगेज हवाई करतब. सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है. और इस टीम ने भोपाल को अपने रंग में रंगा था 2005 में. और अब 18 सालों के बाद हम फिर तैयार हैं आपके दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए. भारतीय वायुसेना अपने अनुशासन, एकाग्रता, परिश्रम, सूक्ष्मता और कार्य कौशलता के लिए जानी जाती है. Today the Suryakiran team will be depicting the same discipline, teamwork, precision and professionalism of the mighty Indian Air Force. तो देवियों और सज्जनों, इंतजार की घड़ी अब जल्द ही समाप्त होने वाली है. क्या आप सब तैयार हैं? भोपाल, आर यू रेडी? तो चलिए साथ मिलकर इनका स्वागत करें, जो हैं भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम, ग्रुप कैप्टन जीएस ढिल्लों के नेतृत्व में. और ये है इनकी एंट्री एरो फॉर्मेशन में. आपने
आपने देखा कैसे नंबर 8 और नंबर 9 अपनी पोजीशन बदलकर डायमंड फॉर्मेशन में आ चुके हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूते ये इंडियन एयरफोर्स के आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं। And at 6,000 feet they flip back और अब ये वापस आ रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। और ये था टीम का लूप मैनूवर। कृपया टीम के पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि जल्द ही आपको दिखेंगे एक सदस्य फॉर्मेशन से अलग होते हुए। And there he goes, that's number 7, स्क्वाड्रन लीडर चंडेल जो कि टीम से अलग हो चुके हैं, लेकिन घबराए नहीं क्योंकि वो जल्द ही वापस आएंगे एक नए अंदाज में। और अब अपनी बाईं तरफ नजरें बनाए रखें क्योंकि टीम आ रही है एक नए फॉर्मेशन में। देखिए कैसे दोनों तरफ के जहाज अब पीछे जा चुके हैं डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक के विंग्स पर, अंग्रेजी का अक्षर वी बनाते हुए। V is for victory, which is what the Indian Defence Forces train for. Ladies and gentlemen, presenting the victory formation. दर्शकों आपको याद होगा हमारे एक मेंबर जो कि टीम से अलग हो गए थे। तो चलिए अपनी बाईं तरफ वन विहार की ओर देखिए क्योंकि वहीं से वापस आएंगे हमारे नंबर 7 और ये दिखाएंगे कुछ अनोखा। एंड देयर ही गोज कमिंग इन फ्रॉम योर लेफ्ट, लुक एट हिम एज ही इनवर्ट्स, प्लीज वेव एट हिम एज ही वेव्स राइट बैक एट यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्मेशन में लीडर के दाहिनी तरफ उड़ान भर रहे हैं नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ, नंबर 6 विंग कमांडर आलोक और नंबर 8 स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे नंबर 6 विंग कमांडर आलोक गांवकर आपके अपने भोपाल के ही बेटे हैं। Flying on the left in all formations are number 3 Wing Commander Hooda, number 5 Wing Commander Bhardwaj and number 9 Squadron Leader Allen. अब आपकी दाहिनी ओर राजा भोज सेतु की दिशा से आएंगे हमारे सूर्यकिरण टीम के विमान। तो कृपया अपनी नजरें अपनी दाहिनी ओर बनाए रखें। And there they come. Look at them in the sky, pulling up for yet another maneuver. और अब देखिए कैसे ऊपर जाते जाते इन्होंने अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ ली है। दिस इज द क्लोवर मैनूवर। And here they are coming diving down, outlining the shape of a clover leaf, a symbol of hope, faith and good luck. तो आपने देखा कैसे आपकी दाहिनी ओर से आरंभ कर इन्होंने ये मैनूवर ठीक आपके सामने समाप्त किया है। देवियों एवं सज्जनों, अब अपनी नजरें दाहिनी ओर राजा भोज प्रतिमा की तरफ ले जाएं क्योंकि वहां से आ रहे हैं नंबर 7 प्रेजेंटिंग अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द माइटी हॉक एयरक्राफ्ट। Helping our heroes fly high in the sky are the heroes on the ground. Our team of skilled technicians is led by Wing Commander Negi, Squadron Leader Dayal, Flight Lieutenant Manil, Master Warrant Officer Kuldeep Kumar and Warrant Officer G.K. Verma. और अब अपनी नजरें कृपया बाईं ओर वन विहार की तरफ ले जाएं क्योंकि आपको दिखेंगे टीम के मेंबर एक डायमंड फॉर्मेशन में आपकी तरफ आते हुए। एंड हियर दे गो पुलिंग अप। आपके सामने प्रस्तुत कर रही है टीम एक बैरल रोल मैनूवर। देखिए कैसे डायमंड फॉर्मेशन में रहकर ये कुछ इस प्रकार रोल कर रहे हैं मानो एक अदृश्य डोरी के इर्द गिर्द उड़ान भर रहे हों।
And that was the Suryakiran team in the diamond formation, dedicated to all the beautiful ladies in the audience. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सभी फॉर्मेशंस में ये विमान आपस में मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हैं। जिन विमान को आप अपने सामने देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132, ऐसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स जिन पे ट्रेनिंग कर भारतीय वायुसेना के अफसर पायलट से फाइटर पायलट्स बनते हैं। And that was Suryakiran 7 blazing through the skies at more than 800 kilometers per hour. और ये थी हॉक एयरक्राफ्ट की दिल दहला देने वाली दहाड़, जो कि दुश्मनों को हिला के रख देने के लिए काफी है। और अब ठीक अपने सामने नजरें ले जाए मनुआ भान टेकरी की ओर, क्योंकि आपको दिखेगी टीम अपने सिग्नेचर मैनूवर में। तो कृपया अपनी नजरें अपने सामने रखें। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे। Ladies and gentlemen, you will soon see the members crossing each other and breaking away. And here you can see 4 aircraft pulling up, showcasing lightning fast trajectories. And now, on the leader's command, you will see the team spreading out in the sky. So let's hear out for the leader's call. मेरी खोजे हर कुछ करिए, कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिर्फ पड़िए। And here they go, fanning out like the arms and services of the Indian Armed Forces, which are united in their mission of defending our nation. और ये तो बस शुरुआत है, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। Till now you saw the team flying together in close formations, but now they have spread out and will be coming in front of you in smaller groups of 2, 3 and 5 aircraft. So sit back and tighten those seat belts as we will now be bringing the thrill much lower and closer to you. सिंक्रो फेज का पहला मैनूवर पेश करने आ रहे हैं आपकी दाहिनी ओर राजा भोज सेतु के ऊपर से सूर्यकिरण 5 और 9। बाईं ओर भी देखिए क्योंकि वन विहार के ठीक ऊपर से आ रहे हैं नंबर 8 और नंबर 6 जो है भोपाल के अपने विंग कमांडर आलोक। हियर दे कम फॉर अ बार्ब्ड वायर क्रॉस। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनून की आगे अंबर बना है। Wow, wasn't that just breathtaking? ऐसा लग रहा है मानो ये जहाज एक दूसरे को छू कर जा रहे हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे जोखिम भरे करतब इतनी माहिरता से करने के लिए कड़ी मेहनत और एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो इस कठिन परिश्रम और अटूट भरोसे की एक और झलक आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे सिंक्रो बडीज नंबर 8 और नंबर 9 आपकी दाहिनी और बाईं ओर से। So if you missed it the first time, here's your chance to catch them again. Swooping in from your left and your right at merely 100 feet from the ground, here they come for the coolest high five in the sky. तो कृपया अपनी दाहिनी और बाईं ओर नजरें बनाए रखें। Here they come. और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे टीम लीडर और टीम के अन्य सदस्य कहाँ हैं? तो चलिए इस बार हम अपनी नजरें अपनी दाहिनी ओर ले जाते हैं क्योंकि वहां से आएंगे सूर्यकिरण टीम के 5 विमान। Look towards your right and you will be able to see 5 Suryakiran aircraft soon in front of you. And here they are coming in the Alpha formation, making the letter A in the sky, signifying the mighty aerospace power that the Indian Air Force is today. But who's that on your left? And that was number 5 fearlessly piercing through the Alpha. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इन विमानों का रंग और इन पर बनी रेखाएं सूर्य की किरणों के समान नजर आती हैं और दर्शाती हैं सूर्यकिरण टीम की पहचान।
Till now, you've seen the aircraft loop, roll and dive. But now, get set to watch them dance. अपनी दाहिनी तरफ राजा भोज सेतु की ओर से आते हुए आपको दिखेंगे सूर्यकिरण टीम के 3 विमान. Look to your right as here comes Suryakiran 6, 8 and 9. Get ready as they show you their moves. Look towards your right as here they come. Are you ready? And here they go in 3, 2 and 1. देवी और सज्जनों, अब आपसे अनुरोध है कि एक बार फिर अपनी नजरें दाहिनी तरफ ही रखें. राजा भोज सेतु के ठीक ऊपर से आते हुए आपको दिखाई देंगे सूर्यकिरण टीम के 5 विमान. Soon approaching from your right, you will see Suryakiran 1, 2 and 3 flying together with number 4 and 7 making circles around them in a helical structure which will look just like the DNA. Here they come. Look to your right. And that was the team's DNA maneuver. Just like in our DNA, we keep the team's motto of Sadaiv Sarvottam, always the best. नीले आसमान में सूर्य का ध्वज सजा है. मन में देश प्रेम और जहन में जोश लिए योद्धा उड़ान भरने को तैयार खड़ा है. मोतियों की तरह बिखर के भी एकजुट हो जाने का हुनर हर किसी में नहीं होता. ये तो बस सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम की खास कला है. भोपाल वालों, लगता है आपकी तालियों की गड़गड़ाहट टीम तक पहुंच नहीं पा रही. और ये देखिए कैसे आपकी तालियों की गूंज से खिंचे चले आए हमारे नंबर 5 बजिंग थ्रू द स्काईज. बचपन में छुपन छुपाई तो आप सभी ने खेली होगी, लेकिन आज आपके साथ एक अनोखी छुपन छुपाई खेलने आ रही है हमारी टीम. तो कृपया अपनी नजरें आसमान में घुमाएं और ढूंढ के बताएं कि आखिर ये है कहां. और वो देखिए आपके ठीक सामने मनुआ भान टेकरी के ऊपर से आते हुए. अगर आप एक जहाज देख पा रहे थे तो एक हाथ से उनकी तरफ वेव करें. And surprising us all, those were 3 aircraft hidden behind each other in the hidden split maneuver. Looks like our pilots are as good at hide and seek as they are at flying their aircraft. और अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि टीम दाईं ओर से आपके समक्ष आने वाली है एक हैरत अंगेज मैनूवर दिखाने. तो चलिए अपनी नजरें दाहिनी ओर ले जाते हैं. Ladies and gentlemen, flying these aircraft today are some of the very best pilots of the Indian Air Force. Coming in from your right, and here they are coming back down and will be twisting in the air, presenting an aerial ballet. And here they are, spreading out, showcasing the downward clover burst. हम आशा करते हैं कि सूर्यकिरण टीम के इन हवाई करतबों ने आप सभी को मंत्रमुग्ध तो किया होगा. टीम के साथ जुड़े रहने और भविष्य में होने वाले डिस्प्लेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टीम को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे. हमारा सोशल मीडिया हैंडल है Suryakiran_IAF, जिसके माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं. और अब आपके दिलों तक पहुंचने ये रहे नंबर 8 और 9 एक बहुत ही खास प्रदर्शन के साथ, जो समर्पित है भोपाल की हमारी ऑडियंस को. तो अपनी नजर रखें ठीक अपने सामने.
आसमान में बन रहा ये दिल दर्शाता है भारत माँ के प्रति हर देशवासी का प्रेम और सम्मान। And there comes our Cupid, number 6, drawing an arrow through the heart and spreading the love. Suryakiran team has stolen hearts and left its mark, not just in India, but also in Sri Lanka, Thailand, Laos, Singapore and Dubai. Every member of the team strives to live up to its motto and be always the best. और इसी के साथ टीम है ठीक आपके सामने मनुआ भान टेकरी के ऊपर दिखाने अपना शो स्टॉपर मैनूवर। और ये थी हमारी टीम लीडर की आवाज जिसे सुनकर आसमान में बिखर गए सूर्य की किरणों की तरह ये जहाज। और ये था टीम का एरियल सैल्यूट हमारे चीफ गेस्ट को। That was the Suryakiran team taking your leave with a promise to meet again very soon. On behalf of my team, I, Flight Lieutenant Kaval Sandhu, would like to thank you for being such a wonderful audience. तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जीवन का हर पल समर्पित, मृत्यु का भी क्षण समर्पित, देश की सेवा को मेरे जीवन की हर श्वास समर्पित, राष्ट्र के रक्षण को मेरे रक्त का कण कण समर्पित और भोपाल तेरे आसमां को वायुसेना का प्रदर्शन समर्पित। और इसी समर्पण के साथ आज के प्रदर्शन के समापन का समय आ गया है। आशा है आपको हमारा प्रदर्शन आकर्षक लगा होगा। हम मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं सभी गणमान्य अतिथियों का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। एवं हम भोपाल प्रशासन के आभारी हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के शानदार प्रदर्शन को आयोजित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। देवियों और सज्जनों, अब आप सभी राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि गणमान्य अतिथिगण के चले जाने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। Ladies and gentlemen, we request you to kindly remain seated till the time the honorable guests are departing. On behalf of the Indian Air Force, we thank you all and hope you enjoy the grand celebrations. Jai Hind!